friends and how are you doing today? Thanks for connecting for today's video जिसमें हम करने जा रहे हैं एक क्यू कार्ड का sample answer and the cue card is talk about a long walk you ever had or a long walk you enjoyed. Cues can be when it was, where you went, with whom you went and how was the overall experience. Walk एक ऐसा काम है जो सबको करना चाहिए. It's really a good habit to develop, but it's unfortunate that many people like me do not go for the walk. Comment section में जरूर बताइए कि आप वॉक के लिए जाते हैं या नहीं जाते. तो अभी लंबी वॉक के लिए जाना है, आइडिया क्या रहेगा? बहुत ही रियलिस्टिक एंड सिंपल सी बात करूंगा मैं इसके लिए. You can say that you are a person who always go for a walk. आपकी ये हैबिट है, मॉर्निंग वॉक के लिए आप जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं और वॉक के लिए आप जाते हैं. कॉलोनी पार्क है या कहीं पर भी आप जाते हैं, लेकिन आपका एक फ्रेंड या कजन ही कहेंगे रादर, जो कि अभी कनाडा से थोड़े टाइम के लिए हॉलीडेज पे आपके घर आया हो, तो आप भी कहेंगे कि आपके अंकल और कनाडा में कजन्स बहुत रहते हैं, कोई ना कोई आया रहता है और ये पंजाबियों की खास बात होती है. और कोइंसिडेंस यही है कि कुछ दिनों से मेरा नेफ्यू यहाँ पर कनाडा से आया हुआ है. तो ये पर्सन जो है वो भी आपके तरह फिटनेस फ्रीक है और जिसकी वजह से वो भी इन द हैबिट ऑफ मॉर्निंग वॉक है. तो वी डिसाइडेड कि हम दोनों मॉर्निंग में इकट्ठे वॉक के लिए जाएंगे. तो भी वॉक के लिए जब आप जा रहे थे, आप कह सकते हैं आप विलेज में रहते हैं और काफ़ी टाइम बाद ये आया और हम जब ये जा रहे थे तो वो डिसाइडेड कि हम फार्म्स की तरफ जाएंगे. और फार्म्स की तरफ जब आप गए तो अगर आप गांव में नहीं रहते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाने की हैबिट में हैं और आप किसी अंकल के पास विलेज में गए हुए थे और उनके बेटे के साथ आप वॉक पे चले गए. वन एंड द सेम थिंग. तो और यहाँ पर आप मॉर्निंग टाइम आप जब गए तो कितना क्लीन एनवायरनमेंट था एज कम्पेयर टू द डे टाइम या एज कम्पेयर टू द सिटी. यहाँ पर बहुत ही क्लीन एयर आपने इनहेल किया. वहाँ पर फ्लावर्स जो ब्लॉसम कर रहे थे, ड्यू ड्रॉप्स थे लीव्स के ऊपर या फ्लावर्स के ऊपर जो आपको मेंटली रिलैक्स कर रहे थे. और ड्यूरिंग दिस टाइम आप बात कर सकते हैं कि आपने चाइल्डहुड मेमोरीज को रिकॉल किया. दोनों ने याद किया कि आप इन्हीं फार्म्स में कैसे टाइम इकट्ठा स्पेंड करते थे. एंड ही वाज रियली अमेज्ड द वे द एरिया हैज डेवलप्ड. इनफैक्ट यहाँ पर हम ये भी बात कर सकते हैं कि आपने उनके लिए कुछ फ्रेश फार्म वेजिटेबल्स प्लग किए और आपने खाए. फॉर एग्जाम्पल कैरेट की बात कर सकते हैं. देन वी कैन talk about कि क्योंकि वो कनाडा से आया था, it was really interesting to know from him about the country. तो आपको उसने बताया कि कैसे इंडियन कल्चर या कैनेडियन कल्चर ये दोनों इन दोनों में डिफरेंसेस हैं. उन्होंने बताया कि उसकी लाइफ वहाँ पर जाने के बाद कैसे चेंज हो गई, हाउ व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ. एंड वो आपको पता ही होता है कि हर क्यू कार्ड में अब जाते जाते उसने आपको भी रिकमेंड किया कि तुम्हें भी अपनी फर्दर स्टडी के लिए कनाडा मूव कर जाना चाहिए. उसके लिए आपको आइल्स एग्जाम करना है या क्या करना है, ये सारी चीज़ें उसने बताई. एंड ये सारी बातें करते क्योंकि यू वर सो लॉस्ट इन द गॉसिप्स, मतलब गुम ही हो जाना बातों में. तो यू रियलाइज कि आप काफ़ी दूर तक आ गए हो. एंड दिस इज़ द पॉइंट व्हेन यू रियलाइज दैट यू शुड बेटर गो बैक होम और वहाँ पर जाके ब्रेकफास्ट किया जाए. और ऐसे ही वापस आते आते भी आप बातें करते रहे और ये ओवरऑल आपने एक वॉक जो थी काफ़ी अच्छे से एंजॉय की. एंड इट स्टिल हैज़ द मेमोरीज विद यू. आई बिलीव आपको काफ़ी रियलिस्टिक एंड सिंपल आइडिया लगेगा और इसे डेवलप करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. और आइए देखते हैं कि इसका सैम्पल आंसर कैसा होगा. एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर making IELTS Speaking Booster the #1 book for January April 2022 to get updated with the latest content of the IELTS exam. Well, I'm quite health conscious, and for physical and mental fitness, I go for a walk daily. I usually go for a walk alone as my friends are a bit lazy to get up early to join me. But here I would share the experience of having a walk with my cousin who was visiting India after a long time. My cousin Karan actually lives in Canada, and last month he was visiting us. Like me, he is also in habit of going for a walk, so he joined me the next morning. Since there are lots of farms around where I live, on his request we decided to have a walk around the farmland. Till now he was complaining about pollution in the area, but when he inhaled the fresh air in the morning, he felt so good. The dewdrops on the leaves and flowers were so health giving. I took it as an opportunity to show him my farms and the vegetables grown there, which he saw after ages. I plucked few fresh carrots for him and he was happy about it.
During this walk, we recalled our childhood memories and had a good laugh. During this walk, Karan told me about how Canadian culture is different than Indian and how his life has changed after moving to that country. He said the country is full of opportunities, especially for students who move there for further study, as they can do some part time job along with study and become independent. He said just in 5 years he has purchased a supercar and a house, which is quite impressive. In fact, he advised me to plan to move to Canada for higher studies. We were so lost in talks that we walked for around 10 kilometers. And this was the time we decided to return and continued enjoying the talks. Overall, it was a long walk I enjoyed that allowed to spend quality time and share feeling with my cousin. First of all, download IELTS coaching application from Google Play Store. If you are an Apple user, then download My Institute app and enter code IELTS IELTS. On home page, click on Store and choose Speaking Booster. Click in Buy Now and pay online to unlock the book for next 6 months. And that's it. You're done. Happy buying!